नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी सम्मानित ऑडियंस का फार्मालोक के इस यूट्यूब माध्यम पर पुनः स्वागत है। आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में टीम फार्मालोक द्वारा समस्त फार्मेसी के महान गुरुजनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आप लोगों से आशीर्वचन समस्त हमारे विद्यार्थियों को लाने के लिए एक पहल की गई है, जिसमें हमारे मध्य आदरणीय प्रोफेसर आर के खार सर है। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रेसिडेंट अवार्डी प्रोफेसर संजय जैन सर, सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, सर आपको नमन, आपका स्वागत। प्रोफेसर बी मिश्रा सर, रिनोन्ड साइंटिस्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सर नमन, आपका स्वागत है फार्मालोक के मंच पर पुनः। इंडस्ट्री की ओर से बहुत ही ज़्यादा अनुभवी डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा हमारे मध्य है। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं फार्मालोक की ओर से। थैंक यू सर, थैंक यू। एवं हमारे जो अन्य अतिथिगण जो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर रंजीत सिंह, प्रोफेसर एम अशावत, प्रोफेसर महेश प्रसाद जी। मैं स्वागत करना चाहूँगा को होस्ट डॉक्टर गीता देसवाल मैम का, फार्मालोक टीम के केंद्रीय संयोजक डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा, श्री अमित झा, डॉक्टर ऋषभ, डॉक्टर अंकुर, एवं इस टेक्निकल हैंडल को जो इस समय यूट्यूब लाइव कर रहे हैं आशीष झा जी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह विश्व फार्मेसी दिवस फार्मासिस्ट की भूमिका को वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में सिग्निफिकेंट स्तर पर दर्शाने के लिए एक दिन के रूप में मनाया जाता है। चूँकि हर दिवस फार्मासिस्ट दिवस होता है, निश्चित तौर पर दिन रात किसी भी समय जब भी मरीजों को आवश्यकता होती है दवाइयों की, फार्मासिस्ट अपनी भूमिका निभाता है, दवाइयाँ प्रदान करता है। आज आपको ये जान के हर्ष होगा कि हमारे पास पीढ़ियों का अनुभव है। इस स्क्रीन पटल पर आप देख सकते हैं। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं इस प्रोग्राम को प्रारंभ करने के पूर्व इस विश्व फार्मासिस्ट दिवस को 25 सितंबर के दिन मनाए जाने की ही एक कहानी साझा करना चाहूँगा। इसकी शुरुआत 1912 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्मासिस्ट की स्थापना इस्तांबुल तुर्की में हुई, और इसके पश्चात फार्मासिस्ट के महत्व को समझते हुए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2010 में निर्णय लिया कि इस दिवस को, इस तिथि को संपूर्ण भारतवर्ष में एक उत्सव के तौर पे बनाया जाएगा, और जिसकी थीम FIP देती है वर्ष 2022 के लिए। जो थीम दी गई है वह है स्वस्थ विश्व के लिए फार्मासिस्ट यूनाइटेड इन एक्शन। तो इस दिवस के तौर पर फार्मासिस्ट दुनिया भर में अपनी सेवाएं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लिखता है, और इन दवाइयों को देने का कार्य, दवाइयों को सेवन, दवाइयों का संग्रहण एवं दवाइयों के विभिन्न पहलुओं पर जो जानकारी प्रदान करता है, एक डायरेक्ट लिंक होता है सोसाइटी के साथ में। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं गीता मैडम को मनोनीत करना चाहूँगा कि एक एक करके वो हमारे आज के जितने भी मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि पधारे हैं, एक एक करके उनको मनोनीत करें, आमंत्रित करें इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम सर। ये मेरे सौभाग्य है कि मैं आप सबके साथ ये स्क्रीन साझा कर रही हूँ, और हमारे साथ जुड़े सभी शिक्षक गणों, विद्यार्थियों और रिसर्च स्कॉलर्स को मेरी तरफ से वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की बहुत बहुत बधाई। तो मैं सबसे पहले आर के खार सर को आमंत्रण देना चाहूंगी। सर, आज के इस प्रोग्राम में प्लीज आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। A very nice good evening to all of you, my colleagues, friends and dear students who are watching this program. It's very heartening that Pharmalok has taken a very good initiative
of creating this platform once again to connect with the students and with the pharmacists at large. As Dr. Saurabh Kose has already told you, that it was FIP, what we call as International Pharmaceutical Federation, which established the concept of World Pharmacist Day in the year 2009. And as he said also, that 25th of September was selected because on this day in 1912, FIP was founded. FIP was founded. Then we integrated with this program after 2010, as you said, if I'm right, yeah, 2010, when Pharmacy Council of India, under the stewardship of B. Suresh, at that time as the president of the council, they took up this issue with the government of India, and it was accepted at all regulatory levels that we will be celebrating Pharmacist Day on 25th September in consonance with the World Pharmacist Day, which is celebrated at the international level. Now, the theme of this conference is every time given by FIP only, and this year's theme, as you all know, is the pharmacist united in action for a healthier world. इसमें दो चीजें मेरे हिसाब से, there are two keywords here. एक तो obviously pharmacist by himself, और two is the health. और लेकिन इसमें थर्ड बहुत अच्छा हुआ, एक छुपा हुआ कीवर्ड है, यूनाइटेड इन एक्शन. वो मुझे लगता है बहुत जरूरी है. और FIP के हिसाब से, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मासिस्ट के हिसाब से, फार्मासिस्ट को 3 भाग्य में बांटा गया है. सबसे महत्वपूर्ण भाग्य जो फार्मासिस्ट का है, पार्ट जो है, वो है pharmacist himself. When we say pharmacist, it means the one who is a part of the consumer, the patient, और जिसको हम बोलते हैं patient oriented pharmacy. जो पार्ट इस वक्त हमारे देश में आहिस्ता आहिस्ता उसकी जागरूकता, उसकी महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रही है. तो ये जो फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में काम करता है, जो कम्युनिटी फार्मेसी में काम करता है, और जो डिफरेंट अदर सेक्शंस लाइक फार्माकोविजिलेंस एंड मेनी अदर प्लेसेस में काम करता है, वो हमें देखना है वो किस तरह से, किस कारणों की वजह से वो हेल्थ से अभी जुड़ा हुआ नहीं है अच्छी तरह से. हम नहीं करें वो जुड़ा नहीं है. हमें देखना हमारा जो इंडियन फार्मासिस्ट है वो हेल्थ केयर सिस्टम से और एक अच्छी तरह से स्ट्रांगली कैसे जुड़ जाए, कैसे इंटीग्रेट हो जाए, तभी तो हम हेल्थ की बात करेंगे. तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं. प्रोसेस इज ऑब्वियसली वेरी स्लो बिकॉज हेल्थ केयर के लिए और हेल्थ से इंटीग्रेट होने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी बाकी हैं, और काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स में इसके लिए काफ़ी प्रगति भी हुई है. ये प्लेटफॉर्म उस पर करने का नहीं है, तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा. लेकिन हम एक ही क्वेश्चन रखूंगा कि जो फार्मासिस्ट पेशेंट के साथ काम कर रहा है उसको देखना चाहिए मैं किस तरह से हेल्थ एस्पेक्ट्स को किस तरीके से पेशेंट तक पहुंचाऊं. जैसे कि उसको जो दवाई देनी है, करेक्ट दवाई कैसे दे देंगे, उसको दवाई कैसे खानी है, किस तरह से उसको लेना है, ये सब चीज़ें जो आप जानते ही हैं. लेकिन इसके अलावा उस फार्मासिस्ट को उस दवाई के बारे में, जानकारी के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो रिसर्च से आती जा रही हैं, कौन सी दवाई बैन हो रही है, किस दवाई का क्या एडवर्स इफेक्ट है, किस दवाई को कितनी देर खाने के बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है. जो कुछ डिजीज़ेस जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं उसमें जब आप दवाई कंटिन्यूअसली खाते हैं तो कौन कौन सी आपत्तियां आ सकती हैं.
यही हेल्थ से जुड़ने की बात है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आजकल जो आप सब लोग जानते हैं, 50 साल पहले हमारे जो परसेंटेज प्रपोर्शन ऑफ डिजीजेज जो थे ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीजेस ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट वाज नियरली 60%। लेकिन आज के टाइम पे द सिचुएशन हैज रिवर्स्ड। आज के दिन में आपको जो डिजीजेज जो हैं, जो लाइफस्टाइल से लिंक्ड हैं, वो नियरली 60% है। आप इस डाटा को देख सकते हैं, ये WHO का भी एक पब्लिश भी हुआ है। इसका मतलब ऐसी डिजीजेज जो डायबिटीज है, जो कैंसर है, जो और भी बहुत सारी आर्थराइटिस है, मेनी डिजीजेज जो है, जो कि आजकल बहुत ही इट इज ऑक्यूपाइंग अ लार्ज स्पेस। उसके लिए भी फार्मासिस्ट को कुछ ना कुछ करना चाहिए एट ऑल कैडर्स। मैं नहीं कहता हूं कि एक जो लड़का है जिसने 10+2+2 किया हुआ है, जितना उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है उस लेवल तक उसकी नॉलेज बॉडी की लिमिटेशन है। लेकिन जो सीनियर फार्मासिस्ट हैं, जो और कैडर्स में काम करने लगे हैं बहुत जगह, जैसे फार्म डी वाले हो गए या और भी बी फार्म वाले हैं, एम फार्म वाले हैं, उनको इस बारे में देखना चाहिए कि जो हेल्थ है, हेल्थ की प्रिवेंशन कैसे करें कि डिजीज ही नहीं हो। ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, इट इज पॉसिबल। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चलाओगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छी कंपनी रखोगे, वो सब चीजें उसी से हेल्थ लिंक्ड होता है। इसको आगे बढ़ाते हुए नहीं, मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा। तो दूसरा जो सेक्शन फार्मासिस्ट का है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल साइंसेज। फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो है, जो आप सब लोग जानते हैं, वो एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। वो आप कह सकते हैं ये एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड फिनोमिनन है, जो कि हमारे देश में काफ़ी प्रगति कर चुका है। हम तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो बने हुए हैं, वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी की वजह से ही बने हैं। उसमें हमें देखना है कि हम किस तरीके से, कैसे इस भाग को, इस पोर्शन को, जो कि ऑलरेडी बहुत ही आगे के पथ पे चला गया है, इसको हम कैसे बढ़ाएं, हम सेफ्टी और एफिकेसी को कैसे इंश्योर करें, हम किस तरीके से नए नए डोजेज फॉर्म बनाएं जो कि पेशेंट के लिए सेफ हो, जो कि एफिकेशियस हो, जो कि अलग अलग दवाइयाँ जो हर्बल सोर्स से, जो आजकल काफ़ी रुचि आ रही है, अनिल जी हमको बताएंगे थोड़ी देर में। काफ़ी सारे, जहाँ भी मैं जाता हूँ, बहुत से लोग हर्बल सोर्स से फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स निकाल के नई नई दवाइयाँ बना रहे हैं। हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम एक ट्रेजर है। उसमें अगर एक साइंटिफिक अप्रोच आ जाए, एक साइंटिफिक धारा लग जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने फार्मेसी को, इस फार्मास्यूटिकल साइंसेस को भी हम अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं, ताकि वी बिकम ए हेल्दियर नेशन, ए हेल्दियर वर्ल्ड। तीसरा जो अंग है, ये 3 अंग 5th में ही मैंने पढ़े हुए हैं, वो दे आर वर्किंग ऑन दीज 3 डायमेंशंस। द फार्मासिस्ट related to the patient, pharmaceutical sciences related to the industry, जिसमें कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल फार्मेसिस्ट के। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, आप पता भी नहीं होंगे लोगों को कि कैसे फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ जा रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी से ट्रेनिंग ले रहा है। आई हैव सीन people going in such unknown places, so that is what we have to see, how we can reach to different places so that we can take the path which is good for the society. तो मैं ये कह रहा था, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तीसरा जो अंग है वो एकेडेमिया है। वो तो मैं फिफ्थ बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ। वो 5th के ये 3 अंग जो हैं, देखिए एकेडेमिया जो है, इट इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द फार्मासिस्ट। हम लोगों को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, एकेडेमिया को सोचना है, हम किस तरीके से
कैसे एक अच्छा फार्मासिस्ट बना सकते हैं, उसकी नॉलेज कैसे इम्पार्ट कर सकते हैं, एंड बहुत ज़रूरी है उसके जो स्किल्स हैं जिसमें हमारी कमी है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, फार्मास्यूटिकल स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और बच्चों को एक ऐसा, जो हम लोग बहुत बात कर रहे हैं बहुत सालों से, 7 स्टार फार्मासिस्ट बनाने की, हम उस 7 स्टार्स को कैसे अपने एकेडमिक प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं, ताकि एक फार्मासिस्ट एक अच्छा, एक रिस्पॉन्सिबल, एक एथिक्स से रिलेटेड और अपने प्रोफेशन की उसकी रिलेटेड हो। और इन्हीं शब्दों के साथ इसको आगे नहीं बढ़ाते हुए मैं सबको अभिनंदन करता हूं फार्मासिस्ट डे के लिए, और फार्मा लोग को भी मैं बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि उन्होंने एक इस तरह का प्रोग्राम बनाया कि जिसमें कि इतने बड़े काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स एंड इंडस्ट्रियल पीपल आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद सर आपका। आपने अपने बहुमूल्य जो भी समय दिया है सर हम लोगों को अपने स्केड्यूल में से आके। और सर हम लोगों के मध्य एक विद्यार्थी है निकिता कुमारी, जिन्होंने जीपेट ऑल इंडिया 5th रैंक स्कोर करी है। तो चूंकि इस कार्यक्रम में जो टॉप 5 विद्यार्थी है जिन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर रैंक प्राप्त करी है, उनका भी सम्मान होना है। तो मैं निकिता आपसे निवेदन करूंगा कि अपना माइक खोले एवं विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस पटल से। प्लीज ओपन योर माइक। Hello, good Yes, evening hello. everyone to the renowned persons present here. Myself Nikita Kumari. I am currently pursuing MS in Pharmaceutics from Naipur Sasnagar, and थ्रू द मीन्स जीपैट का रास्ता बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो पहले तो क्या होता है कि फार्मेसी फील्ड में बच्चे कोई फर्स्ट चॉइस से मैक्सिमम बच्चे जुड़ते नहीं हैं, एंड ड्यू टू इसके रीज़न के वजह से उनको ऐसा होता है ना, हमारे एकेडमिक एंड इंडस्ट्रीज़ में जो हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो हमें एकेडमिया में पढ़ाते हैं बी फार्म लेवल पे, एंड इंडस्ट्री में जो फंक्शन जिस फंक्शन पे वर्क हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता है कि एक्चुअली में फार्मेसी क्या है, कैसी फील्ड है। तो वो एक लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बच्चों का खुद ही इंटरेस्ट चला जाता है कि मुझे इस फील्ड में आगे परस्यू करना भी है या नहीं करना है। बट मैं उन स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी कि ये फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैंने एक्सप्लोर किया एंड मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। तो द थिंग इज़ कि हमें पढ़ते रहना पड़ता है, बहुत सारे स्कोप्स है, अच्छे गाइड्स हैं, तो हार्ड वर्क चाहिए होता है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं होती है, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना रहता है। तो हैप्पी फार्मासिस्ट डे टू ऑल ऑफ यू सर एंड मैम प्रेजेंट हियर। Thank you, Nikita ji, for sharing your thoughts as a student, and wish you many more lucks in future endeavors from all Pharma Log team. Thank you for joining us. Over to Geeta ma'am. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। एंड सबसे पहले मैं निकिता आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। थैंक यू मैम। securing a 5th रैंक इन ऑल इंडिया। थैंक यू मैम। और जैसे कि आपने कहा कि जो फार्मेसी प्रोफेशन जो है वो किसी भी स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस नहीं होता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी, नजरों को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, अपनों को चाहो सितारे बदल जाएंगे, जरूरत नहीं होती है कश्ती बदलने की, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो जैसा कि हमारे मेंटर्स हमारे साथ हैं और जिस हिसाब से फार्मेसी प्रोफेशन ग्रो कर रहा है, तो जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि, और आई थिंक आ चुका है, कि फार्मेसी प्रोफेशन स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट चॉइस बन जाएगा, और हम ये देख भी रहे हैं। तो थैंक यू सो मच निकिता फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर अस।
थैंक यू मैम। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर एस के जैन सर को। सर प्लीज आप अपने विचार हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे टीचर्स के साथ साझा कीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए सर। Well, first of all, I would like to thank organizers from Pharmalok, especially Dr. Amit Jha, for inviting me and sharing my views regarding World Pharmacist Day. I'm also pleased to say that Pharmalok is continuously organizing such type of program just to aware our budding pharmacists as far as the pharmacy practice is concerned. This is a great work which Pharmalok is doing. So I congratulate all the organizers, all the stakeholders of the Pharmalok, who is taking such a lot pain to aware our society regarding the pharmacy profession. As Professor Khar said, very rightly said, that 25th September is observed as a World Pharmacist Day, and it is given by the FIP, International Pharmaceutical Federation, and it was given by a Turkish member, FIP Turkish member, and he suggested that 25th is the suitable date for celebrating the pharmacist activities and aware the society regarding the pharmacy profession. And those who are not aware about the what is the FIP, International Pharmaceutical Federation, I would like to say that International Pharmaceutical Federation, which is having headquarter in Netherlands, it is a global body representing over 4 million pharmacists, more than 4 million pharmacists, and more than 132 organizations, pharmaceutical organizations are registered with this FIP, and they work to meet world healthcare needs. FIP is a non-government organization that has been in official relation with the World Health Organization since 1948. One of FIP's key strategic objective is to advance pharmacy practice on a global level. By celebrating World Pharmacist Day, FIP is not only raising awareness of the role of pharmacists in the healthcare, but also promoting their role through the increased community involvement on the national and local level. Say, we have seen then during the COVID-19 pandemic, it was a challenging for the pharmacists to combat with the COVID-19 pandemic situation. At that time, pharmacists play a very vital role in the development of vaccine in very short time and save life of the million of the people. They also educated the society regarding how to keep themselves safe and away from this notorious virus SARS-CoV-2, and timely distribution of the medicine to the patient. Once FIP president Dr. Jordan said on this occasion that we have to show how pharmacists contribute to a world where everyone get benefit from the access of safe, effective, quality, and affordable medicine or vaccine and health technologies, as well as from the pharmaceutical care services. The main purpose is to how to give a medicine which will be beneficial to the patient so that the illness of the people can be overcome.
And the main purpose of pharmacist is just to produce a medicine which is having the zero defect. As I say, zero defect, it means there should not be any compromise with the quality of the uh, dosage form or the medicine. There is no, because we are giving medicine to the patient, the human beings. So if there is any mistakes in the medicine, if there is any flaw in the medicine, if there is any defect in the medicine, that will directly affecting our patient or human being. So in our lecture, I used to say that the profession of pharmacy is much better than the profession of the physician. Why it is much better than physician? अभी निकिता ने पूछा था कि ये सेकंड चॉइस है, कि मेडिकल में नहीं हुआ तो हम फार्मेसी में आ गए। हम अपने बच्चों से कहना चाहूँगा, अपने बडिंग फार्मासिस्ट से कहना चाहूँगा कि ये सेकंड चॉइस नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड चॉइस है तो आफ्टर कमिंग इनटू द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी आप इसको फर्स्ट चॉइस बना लीजिए, क्योंकि जब आपकी फर्स्ट चॉइस ही रहेगी तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे। और इसमें फर्स्ट चॉइस बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना, क्योंकि आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं होगी तो आप मेहनत भी नहीं करेंगे, आप अच्छे फार्मासिस्ट नहीं बनेंगे, आप कभी भी फार्मा इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल एजुकेशन या फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन में आप फार्मेसी प्रैक्टिस में जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपके अच्छे परफॉर्म ना करने से सीधा उसका इफेक्ट जो सोसाइटी पे पड़ेगा, आपका सीधा इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे पड़ेगा, आपका सीधा इफेक्ट पेशेंट्स पे पड़ेगा। तो आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है, एडवाइस भी है, आप इसको जो भी विद्यार्थी हैं जो फार्मेसी में पढ़ रहे हैं, दे शुड टेक इट एज ए फर्स्ट चॉइस, फॉर देयर फर्स्ट चॉइस। जो भी आप करें बड़े ऑनेस्टली करें, क्योंकि इसमें ऑनेस्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कोई भी फैक्ट्स इसमें छुपाए तो उसका निराकरण आराम से नहीं होगा और वो सीधा इफेक्ट पड़ेगा आपकी हेल्थ पे, आपकी कम्युनिटी की हेल्थ पे। तो ये आपका फर्स्ट जो कहते हैं ना कि ड्यूटी बन जाती है कि आपको फार्मासिस्ट होना चाहिए। हम कहते हैं कि डॉक्टर एक गलती करता है तो एक पेशेंट ही इफेक्ट होगा। डॉक्टर अगर गलती करता है, फिजिशियन एक गलती करता है तो एक पेशेंट जिसको वो देख रहा है वही इफेक्टेड होगा। परंतु अगर फार्मासिस्ट गलती करता है तो थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट विल बी अफेक्टेड, दोज हु आर टेकिंग द मेडिसिन डेवलप्ड बाय यू। तो आपने प्रोडक्शन फ्लोर पे या आपने फार्मा इंडस्ट्री में है, आपने कोई मेडिसिन डेवलप की है, उसका बेस्ट साइज मान लो लेक्स ऑफ द टैबलेट्स है, तो आप सोच सकते हैं कि एट ए टाइम अगर वो 1000 या 2000 लोगों ने भी ली है तो 2000 लोग उस टाइम पे इफेक्टेड होंगे, क्योंकि आपकी मेडिसिन है जो सब स्टैंडर्ड है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ योर नॉलेज, फार्मेसी नॉलेज। तो आपको अपनी फार्मेसी नॉलेज 100% फुल प्रूफ बनाना होगी, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगी। आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप अच्छे फार्मासिस्ट बनेंगे, अच्छा फील्ड पे काम करेंगे। तो इस वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पे बहुत सारी चीज़ें खान साहब ने कही हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी और आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बहुत प्ले इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं, स्पेशली जब पैंडमिक सिचुएशन होती है कोई भी, जहाँ पर आपको वर्कर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमने देखा है कोविड टाइम में तो हमारे फार्मासिस्ट ने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है और उन्हीं के कारण हम इतनी लाइफ सेव कर पाए। तो इस फार्मासिस्ट डे पे मैं कहना चाहूँगा इंडियन फार्मासिस्ट जो होते हैं, दे रिप्रेजेंट्स थर्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशन ग्रुप इन द वर्ल्ड, and in India today there are more than 30 lakhs registered pharmacists working in various positions and applying their unique knowledge and skill, contributing to a lot to the health of the nation. So ये फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है
नेशन को हेल्दी बनाने में. And I believe all pharmacists deserve strong recognition for their vital healthcare role and services they provide to consumers. So I wish every pharmacist a happy World Pharmacist Day, and I wish every pharmacist every success in helping to improve the health of the communities they serve. Thank you all and take care of yourselves. God bless you all. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम. आपने सर अपना बहुमूल्य समय निकाला, आशीर्वाद प्रदान किया. थैंक यू सो मच सर. आगे बढ़ते हुए हमारे साथ दीपक कुमार जुड़ चुके हैं. दीपक कुमार जी का इस बार ऑल इंडिया 4th रैंक रहा है जीपैट एग्जाम में. दीपक जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना माइक एवं स्क्रीन ओपन करें एवं ऑल इंडिया जितने भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, जीपैट आप क्रैक करके आए 4th रैंक पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे, अपना अनुभव साझा कीजिए पढ़ाई के बारे में. ओवर टू यू. Yes, Deepak ji, you can hear us? Yes, sir. Good evening, everyone. I am Deepak Kumar, and currently I am pursuing MS in Medicinal Chemistry from Naipasha Sagar, Mohali. And is all who are joined through this platform. I am very happy pharmacist, and this day is celebrated to acknowledge the pharmacists who are actually industry and various from and drug development sales of the drug. But in current in our pharmacy साउंड खराब है. Yes sir, there are some network issue है. तकनीकी, there is some technical glitches. Thank you Deepak, meanwhile joining in between. आप आते हैं तो आपको लेंगे. Next coming up, I would like to request B मिश्रा सर. ये सर कृपा करके आप आए, अपना माइक ओपन करें और साधुवाद प्रदान करें. सभी को एक बार फिर से प्रणाम. और इस पावन दिवस पे हम सभी फार्मासिस्ट को साधुवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि वी आर सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे टुडे ऑन 25th सितंबर वर्ल्ड वाइड. आई होप सो. हमें थोड़ी आसानी हो गई क्योंकि हमारे अग्रज प्रोफेसर खार साहब और हमारे मित्र डॉक्टर जैन ने काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में बहुत कुछ बता दिया है, तो उसमें हम फिर से नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक रिपीटिशन होगा. बट आई विल कम टू द टॉपिक ऑफ द थीम ऑफ द वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑफ टुडे. और उससे इर्द गिर्द फिर हम कहाँ लैग करते हैं और हमें क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा हम बोलेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, लेट मी वेलकम यू ऑल टू ए प्रोफेशन which is called a pharmaceutical profession, and let us be very sure that this is a profession which saves the life of the nation. इस देश की जिंदगियां अगर बच रही हैं तो इस प्रोफेशन की वजह से ही बच रही हैं. पूरा जो हेल्थ सेक्टर है वह उसके दो विशेष अंग हैं. पहला जो मेडिकल सेक्टर है, मैं तो इसको अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पहले लेक्चर में बोलता हूं क्योंकि अभी निकिता ने बड़ा अच्छा बताया, विच आई फुल्ली एग्री विद दैट. एवरी फार्मेसी स्टूडेंट्स never come to the pharmacy course by choice. They always come by chance, including me, who has come by chance. So, but let me tell you very frankly now, after spending so many years in this profession,
कि ये बाई चांस का जो प्रोफेशन है इतना उम्दा है, इतना बढ़िया है कि डॉक्टर जैन ने ऑलरेडी कहा कि इससे अच्छा कोई प्रोफेशन हो नहीं सकता। इसको मैं सबमिट करेंगे कुछ उदाहरण के साथ। जैसा कि मैंने कहा कि पूरा हेल्थ सेक्टर 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जो मेडिकल डॉक्टर्स द्वारा, डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन है, सर्जन है, many of the people are there, including the non medical staff, उनके द्वारा गवर्न होता है, जिसमें अगर डॉक्टर का रोल देखें तो उनका रोल इतना है कि वो दे कम टू ए कंक्लूजन ऑफ ए प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। और उनकी जितनी पढ़ाई है, फॉर्चुनेटली मैं मेडिकल कॉलेज में भी मैंने करीब 9 साल पढ़ाया है MBBS स्टूडेंट्स को IMS BHU में। तो मैंने ये महसूस किया है कि पूरी मेडिकल की पढ़ाई में एक डॉक्टर को जितना ज्ञान प्राप्त होता है या जितना ज्ञान दिया जाता है, वो सिर्फ इतना ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है उस पढ़ाई से कि वो एक अच्छा लेट अस से डायग्नोसिस कर सके, वो मरीज की जो बीमारी है उसको पहचान सके। और उसको पहचानने के बाद जब इलाज का इशू आता है तो उसको पास जो दवाइयाँ होनी चाहिए, जो मेडिकल डिवाइसेज होनी चाहिए, जो भी आजकल सुविधाएं आज उपलब्ध हैं वो होनी चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन फार्मासिस्ट का होता है। So I personally put this whole healthcare sector 50% towards the medical people and 50% towards the pharmacist, because अगर डॉक्टर डायग्नोसिस कर भी दिया और उसके पास अगर दवा नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि रिमोट विलेज में, पहाड़ों पर, ऐसे जगहों पे जहां दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो सारी बीमारी जानने के बाद भी वह मरीजों को बचाया नहीं जा सकता है या बचाया नहीं जा पाता है, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो मेडिसिन अवेलेबल देयर। तो मेडिसिन अवेलेबल कराने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। तो जिंदगी बचा कौन रहा है? जिंदगी तो बचा रहा है फार्मेसी प्रोफेशन। डॉक्टर जैन ने ऑलरेडी इसको कहा कि हमारी जिम्मेदारियां कहीं बहुत ज़्यादा हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक डॉक्टर एक मरीज को अगर कोई प्रॉब्लम हुई किसी दवा की वजह से, तो वह सिर्फ उस एक मरीज से उसका संबंध है उस पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन हमारे द्वारा बनाई गई या निर्मित दवाइयाँ, अगर उसमें कोई खोट है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द मास, द होल सोसाइटी, और उसमें बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होने जा रहे हैं या होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी कहीं बहुत ज़्यादा है पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में, और इसके लिए मुझे कुछ बातें कहनी है। जैसा कि थीम है द फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर ए हेल्दियर वर्ल्ड, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये थीम। प्रोफेसर खान ने भी कहा कि बड़ा अच्छा एक थीम है, इसमें 3 भागों में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, विच आई लाइक वेरी मच। So I would like to emphasize here that the first word which is coming as that united in action is really very important today. अब united in action अगर आप इसको एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको हर लेवल पे देखना होगा। हम एकेडमिक से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा जो फार्मासिस्ट है उसको वो कल पूर्ण रूप से फार्मासिस्ट होता है थ्रू एकेडमिया। उसको पढ़ाने वाले जो हम शिक्षक हैं, उनके थ्रू, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान से ही वो जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर पाता है उसको यूटिलाइज करता है। तो अब हमें अगर यूनाइटेड इन एक्शन लाना है तो सबसे पहले एक टीचर को बहुत अपडेट होना होगा, नॉलेज। द थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट एवरी डे इन एवरी फील्ड। ऑफ कोर्स इन फार्मेसी इट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, बट ऑफ कोर्स इन एवरी अदर फील्ड आल्सो इट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। तो हमें पहले प्रतिदिन एज ए टीचर अपने को अपडेट रखना है विद द थिंग्स विच आर चेंजिंग इन द एरिया ऑफ फार्मेसी एंड इंक्लूडिंग मेडिकल डिवाइसेज एंड मेडिकल सेक्टर। और फिर अपने स्टूडेंट को उस नॉलेज को इम्पार्ट करना है इन एडिशन टू वॉट एवर कोर्सेज और वॉट एवर सिलेबस और करिकुलम विच वी आर कवरिंग और टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। इसको
करने में दोनों में आई मीन ऑलरेडी एक सामंजस्य होना चाहिए। और यहाँ पे एक हमें एज ए टीचर एक काफ़ी गैप दिखता है। मैं हर प्लेटफॉर्म पे इसको बोल रहा हूँ और बोलता हूँ, इसमें मुझे आज की डेट में बहुत गैप दिखता है और इस गैप को फुलफिल करना होगा। आज के दिन आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पे मैं आह्वान करना चाहता हूँ फॉर ऑल द टीचर्स, लेट अस टेक ए ओथ टुडे दैट कि हम पहले अपने को एक स्टूडेंट बना करके अपने नॉलेज में कोई गैप नहीं लाएंगे। आई डोंट वांट दैट एनी डिफेक्ट शुड बी देयर इन द नॉलेज। अगर हम जीरो डिफेक्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक टीचर का जो ज्ञान होना चाहिए वो जीरो डिफेक्ट ज्ञान होना चाहिए। उसमें अगर कोई कमी है तो फिर हमारे आने वाली जनरेशन जो है, स्टूडेंट्स जो फार्मासिस्ट होने वाले हैं कल और जो फार्मेसी प्रोफेशन में काम करने जाने वाले हैं, वो डिफेक्ट लाएंगे ही। तो टीचर को अपडेट करना होगा अपने आप में, और देन बाय इम्पार्टिंग द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स को भी एक ओथ लेना होगा कि वो बहुत मन चित्त लगा करके इसको पढ़ेंगे और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे और जहां जरूरत होगी उसको अप्लाई करेंगे। इसको कैसे संभव किया जा सकता है, इसके लिए मैं एक 3 मंत्र देना चाहता हूं जो विद्यार्थियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन टीचर के लिए भी हो सकता है और ये किसी भी प्रोफेशनल के लिए भी हो सकता है, चाहे वो जिस सेक्टर में काम कर रहा हो। सबसे पहले यह है कि मुझे अपने प्रोफेशन के प्रति रिस्पेक्ट रखना होगा। एक श्रद्धा बहुत जरूरी है। जैसा कि ऑलरेडी ये चीजें आ रही हैं, निकिता ने भी कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि फार्मेसी प्रोफेशन बाय चॉइस नहीं होती है, बाय चांस होती है। तो अगर हम फार्मेसी प्रोफेशन में आ गए जो स्टूडेंट या आज हम टीचर हैं या जैसे भी हैं जिस रूप में हैं, तो पहले तो हमें आई विल हैव टू हैव ए फुल रिस्पेक्ट फॉर दिस प्रोफेशन। You know, we can't do the great things without having the respect for the profession or without having the respect for the person. जब हम रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो आप जरा सा उस पर गौर करिए कि अगर किसी अपने सीनियर व्यक्ति का मैं रेस्पेक्ट करता हूं तो मेरे मन में कितनी अच्छी भावनाएं होती हैं। तो आप अगर किसी प्रोफेशन को रेस्पेक्ट करते हैं तो पहले आप क्यों रेस्पेक्ट करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि बिकॉज यू आर इन सच ए प्रोफेशन विच इज गोइंग टू रियली सर्व द ह्यूमैनिटी, which is really going to serve the society. I should say it is going to serve the living being, and because we are not only dealing with the medicines which are being given to the human but also is being given to the animals. तो पूरा जो जीवित समाज है उन सबको हम एक अच्छा जीवन प्रदान करेंगे। कि पहली बात तो डॉक्टर खार ने बहुत अच्छा बताया, उसमें तो एक मेरा लंबा टॉक हो जाएगा कि पहले अगर हम उनकी लाइफ स्टाइल में ही इतना बदलाव ले आने को बीमार ही ना पड़े। यस, ये तो हमारा रोल फार्मासिस्ट के रूप में ये भी है। सबसे पहले तो यही है कि पहले हम ऐसा कुछ करें, इतना ज्ञान दें, लोगों को समाज में जागृत करें कि उनको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। लेकिन अगर बीमारी हो ही गई है और होएगी ही, बिकॉज वी आर सच ए पॉपुलेटेड पीपुल इन द कंट्री, तो फिर उसको बचाव के लिए हमें उच्च गुणवत्ता की मेडिसिन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदार हैं तो अच्छा काम तभी होगा जब आपको अपने प्रोफेशन के प्रति आपकी श्रद्धा होगी, रिस्पेक्ट। फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ दैट यू आर इन वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन वेयर यू कैन परफॉर्म द बेस्ट फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। नंबर 1, सो रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोफेशन। नंबर 2, you must have the confidence. विश्वास एक बहुत जरूरी चीज है कि by remaining in this profession you can do the best for the not only for you but for the society and also for the country as well as for the world. और ये सत्य है कि आप कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके थ्रू हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और रियल जो सर्विस होती है सोसाइटी ह्यूमन की, जिसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ हमारा जीवन सफल हो रहा है किसी काम को करने में, वो जो फीलिंग है वो आपको इसी में मिलेगी। तो उसके लिए आपको एक विश्वास करना होगा। दैट कॉन्फिडेंस हैज टू बी इनबिल्ट अप इन यू दैट आई एम इन सच ए प्रोफेशन विच रियली इज गोइंग टू सर्व ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग। और यहाँ पे मेरा जो यह शरीर भगवान ने दिया है, इसका इससे बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है? अगर ये फीलिंग अगर आपके अंदर में आ जाएगी तो आप इतने लगन से अपनी पढ़ाई करेंगे, अपने ज्ञान को अर्जित करेंगे, that you will be able to do the best wherever you will be. चाहे आप जहां भी रहोगे, इस प्रोफेशन में रहो या जहां भी रहो, वहां बहुत अच्छा कर सकते हो। और तीसरा ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपको
पेशेंस रखना होगा। सब्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, विदाउट पेशेंस आप जिंदगी में तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो कुछ आप नियम बनाइए, उस नियम को फॉलो करिए और उसके बाद एक पेशेंस रखिए, लगातार उस कार्य को अच्छी तरीके से करते रहिए और पेशेंस के साथ उस दिन का इंतजार करिए जब आपको इस दुनिया वाले पहचानेंगे और कहेंगे हाँ ये वो बंदा है या बंदी है जिसने इस समाज को एक अच्छा फार्मासिस्ट के तौर पे जो कुछ भी दे सकता है इसने दिया। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट you must have the respect for your profession, you must have the confidence that you are in the best profession, and third is that you must have the patience that you will be able to do the best in your profession। और ये इन तीन चीजों को रखते हुए एज ए स्टूडेंट आई हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न as best as you can, don't run after the money। Let me tell you very frankly, I am speaking, I hope I am speaking to the most of the students who are listening this as a audience। मैं ये कहना चाहता हूँ कि as far as the money is concerned, sky is the limit in pharma profession। ये मैं कहानी नहीं कह रहा हूँ, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, एक फार्मेसी में है, वो भी बहुत पैसा कमा रही है, एम फार्म करी है, और मेरा बेटा तो बीटेक और एमबीए है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बीटेक एमबीए होने के बाद भी वह फार्मा प्रोफेशन की ही कंसल्टिंग कर रहा है। इट इज ए सच ए प्रोफेशन विच इज सो मच ओपन टू द वर्ल्ड, और इतनी इसमें डिमांड है, इतनी इसमें आवश्यकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आफ्टर ऑल हम जो दुनिया में एज ए ह्यूमन बीइंग है, हमको सरवाइव करना है, हमें स्वस्थ रहना है। तो इससे अच्छा कौन सा प्रोफेशन हो सकता है जो इस पूरे ह्यूमन हेल्थ का ठेका ले ले। तो हम लोगों ने एक तरह का ठेका लिया हुआ है दैट वी आर गोइंग टू सर्व दिस सोसाइटी इन ए बेस्ट पॉसिबल वे बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन्स विदाउट any defect, zero defect, as well as now medical devices have also come in our umbrella। There also the lot of opportunities is there। Pharmacovigilance is coming in a big way where you have to identify the adverse reactions and try to see that how best our safety can be given to the patients। The efficacy is another important issue। So I think there are many other points on which I can deliberate and I can prove that I mean this is the one of the profession which is really as a pharmacist you can feel proud to be a part of the society, to serve the nation as well as the people in the society। With these words I think I should not take much time because there is a limit। I understand there is a time limitation is there। मैं एक बार फार्मा लोग को बहुत बधाई देता हूं कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने जो इस बार स्टूडेंट्स को लाया है, 5 जो स्टूडेंट जो जीपैट में इन्होंने क्वालिफाई किया है, रैंक लाए हैं, तो इससे स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे निश्चित रूप से। और इन्होंने निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय कार्य है, उनको भी इस मंच पे बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। आई वेलकम यू ऑल एंड कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव scored top 5 positions in the GPAT। I hope you will be the torch bearer for the future students who are going to come out with whatever wishes they are having in the profession। मैं सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और सभी महानुभाव जो यहाँ प्रेजेंट हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे इन चंद शब्दों को सुना। और ऑर्गेनाइजर को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for sharing your valuable thoughts with all of us। और मुझे लगता है कि जो आपने मूल मंत्र रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस इन प्रोफेशन हम लोगों के साथ शेयर किया है, तो जाहिर ही हमारे जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं वो अपने जीवन में इसको लागू करेंगे और आने वाले टाइम में ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ ऑल इंडिया सेकंड रैंक रेहान जी हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और आपका स्वागत करती हूँ हमारे फार्मालोक मंच पे। कृपया आप। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हियर। आई greet all the dignitaries a very happy World Pharmacist Day and thank you so much for having us here। Rehan, please share your journey with our students। Okay मैम, definitely। So मैंने तो जीपैट का प्रिपरेशन 3rd ईयर से स्टार्ट कर दिया था।
on the I come from Bombay College of Pharmacy, Mumbai. That is my alumnus. Currently, I am studying in Naipar Mohali in the medicinal chemistry department. एंड जर्नी तो कुछ ऐसी थी कि कोविड का लॉकडाउन जो लगा वो बहुत लोगों के लिए दिक्कत की चीज़ थी, लेकिन हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली वो थोड़ा सा बून इन डिस्गाइज था, क्योंकि उसमें बहुत टाइम मिल गया पढ़ाई करने के लिए। बाहर जो भी चल रहा था वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अंदर हमारे पास बहुत टाइम मिल गया थोड़ा प्रिपरेशन के लिए, विच वॉज वेरी फ्रूटफुल एट द एंड। उसका रिजल्ट हमारे लिए बहुत अच्छा आया। एंड थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत लंबी जर्नी होती है कि मतलब डे इन डे आउट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। बट जैसे सर ने बोला कि थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो फिर आपको रिजल्ट हमेशा मिलेगा। तो मेरे साथ जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आई गेस उनकी सबकी स्टोरी सिमिलर है कि उन्होंने 1 साल 1.5 साल वही मेहनत की और फिर उनको जो फ्रूट मिला, इसीलिए हम लोग आपने आज हमको यहाँ पर इनवाइट किया है और वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Rehan. Thank you very much for sparing your valuable time for us. थैंक यू। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा सर को बुलाना चाहूंगी। सर, प्लीज share your thoughts with us. Right. Thank you very much, madam. Am I audible to all? Yes, sir, you are audible. Yeah, please. Okay, thank you. So first and foremost, I convey my regards to all academic dignitaries who all are present here on the platform of Pharmalok. I convey my respect to you all teachers over here who are building the pharmaceutical nation, and also a compliment and happy World Pharmacist Day on this particular day. I am very thankful to the organizers, Amit Jhaji, Dr. Santosh Verma ji, and all the team member, Dr. Saurabh ji of Pharmalok, that on such a precious occasion you have invited most of the students as the audience. That is very, very important part, because convincing them and promoting the profession to them is the major aspect in building up any profession. So first and foremost, I convey to all the audience and particularly the scholars and students who all are here for choosing the profession, pharmaceutical profession. I would just tell you why I am just conveying my compliment. Because in the whole globe, pharmaceutical profession is the third largest profession in the whole globe. First and foremost comes the IT industries. Second sector is the banking sector. And third is the pharmaceutical sector. So nobody should look into that it is a second choice profession. Profession is definitely number one. And most of the developed countries, including India, the economy of pharmaceutical profession is contributing a big boon to the national economy. Even in India also, if I assess Indian pharmaceutical market, it is about 1.75 lakh crore market per annum. We are not confined only to our nation, but definitely Indian pharmaceutical industry, they have well recognition all throughout the world, including USA, including Health Canada, including MHRA, and even the countries like African and in the Gulf region as well. If there is no Indian, I can challenge from my side that in all parts of the globe, if there is a pharma profession, definitely there is a significant contribution of the Indian pharmacist. So be always motivated, make it a profession of your choice, first choice. There is no second in this particular world, and this is a profession which is the all-time profession. There is no time in the world, any time in the globe or universe when the health system is not there. Health system is always there. Whether we are taking the benefit from the natural sources
or we have learned our innovative sciences and developed the newer molecules, or technologically we have advanced them to for the systematic deliveries or sustained deliveries and all that. We have entered into the biopharmaceutical sectors also, and that is very much recognized all throughout the globe. Particularly this pandemic time, Rehan was telling about, it was an opportunity for the scholars to prepare for their competitive exam. I would say during the pandemic also it was really a task for the complete pharmaceutical fraternity who have worked into this particular sector through any of the ICMR or WHO or any particular international body, health body, and we have developed our vaccination, number of the biopharmaceuticals, newer molecules as the antiviral drugs, and you must have seen that the industry has grown even during the pandemic time. So it was just a challenge or a threat from the nature that how the Indian pharmacists are good, and globally India has contributed very, very significantly, maybe because of our own government, because of our own professional innovations and skills, as well as on part of that our Indian industry was not restricted during this particular time, and including my own industry, we have worked day and night during this particular tenure. I would now like to focus the title of United in Action. This is the major thing. Basically, till now, though we have progressed and we are much more advanced than what we used to be maybe about 2, 3, 4 decades before, but now we are very much good in action. And United in Action is a very brilliant thought is given in the title or theme of this particular day. That is very, very important. Till the time we are not like a train. Train is always united in sequence. Suppose if it is not united in sequence, we do not know where would be the AC coach, where will be the guard room, where will be the engine, how would be the this or the goods where they are to be kept. So if things are not in sequence, probably our traveling will become very difficult. Same thing happen if our actions in different field, if they are not united, right, then probably you feel somewhere some vacuum is there or some gap is there. I would recommend that all the disciplines of the pharmaceutical profession, right from the in academia to the innovations, research, market research, ultimately with the theme of satisfying our society with our contribution. What is their expectation? What do they want? Because our social representation seems lesser than that of the doctor. Our society, what previously might be the thought that when we say we are pharmacists, probably we are not given that particular weightage as by the society as weightage is given to the doctor, because the patient goes to the doctor and doctor convinces them for number of the things. So here the point is coming that in our pharmacy profession, in community pharmacy or in retail pharmacy or in hospital pharmacy, most important part is improving the behavior of the pharmacist so that the patients get satisfied. During the talk with Professor Kharsar as well as Mishra ji and Jain Saab, they have highlighted on the need of improving our skills, having more and more coordination with the society. That is very, very important aspects. And if that thing goes, or whosoever are doing now, so much of the professional representation is there. Maybe the chain pharmacy, retail pharmacy, suppose if you compare the Apollo pharmacy and with any of the street corner chemist shop, there is a lot of difference between the behavior of the two. If you talk to the Apollo pharmacy person or any particular professional chain pharmacy person, probably the behavior is good because he is qualified. He
has experience and learn, and he knows probably something better than the person who is individually tackling. You do not know whether he himself is pharmacist or not, or he has hired the pharmacy services. So depending upon, this is the one of the area I would suggest that our coordination to the society, our services to the society, there need to be the more recognition and visibility in the society. That's why even earlier also, when we used to celebrate our National Pharmacy Week, so rather than the day, it used to be a week, and the purpose of the week used to be that more and more of our professional contribution, we bring it to the society. In our college days, I remember people, they used to, our teachers, they used to take that there would be the flag march. So idea of the flag march used to be that at least the society should know that there is something like pharmacy or pharmacist. Now at least they know that pharmacy profession is there. That is the first and foremost part I would recommend, should be that we should be visible to the society with our contribution. That is the first and foremost thing. Second thing is, even in our academy also, there has to be the more amendments into the curriculum of the courses also. Some of the pharmacy entrants, they do only the diploma pharmacy, or they may do the B pharma. So how they are to be developed skillfully, that is very important. Skill is very important. There is many times the question is coming on the part of the employment. I was just listening to one program in India. Probably our unemployment ratio is about 8.3% in our country. It is a generalized, not particular to the pharmacy. I was surprised to see that 17% is the graduates who are unemployed, and 0.3% is the ungraduate, or maybe the low qualified people are there. And what is the reason for that is that they have not been developed skillfully. The skill is very less in the graduates or degree holding people, whereas the unqualified people, they are better equipped with the skillful, right? So that is something, though it was a overall comprehensive statement, not from the pharmacy profession, but it is again very much required for the part of the employment also. Recognition to the society is the one aspect. Now I come to the recognition in the industry. In the industry, academic qualification definitely is very essential, but still it is not mandate. Like in academia, teacher has to be the M Pharma. In order to become the associate professor, you has to have the PhD degree. But in industry, there is no mandate of the PhD or the M Pharma or like that. And many of the people, with their behavior, with their coordination, with their management skill, with their academic skill, with their professional knowledge, everything they manage in such beautiful way that they comes to any of the senior position. And that skill would definitely come when students, they are realize the importance of the practical working. Nowadays something is happening, maybe in the curriculum also, pharmacology particularly, even to the M.Pharm level also, I have seen that non-practical work is given to the student just for the sake of completing the project. Maybe the simulations softwares are there, or any of such things. So when the person goes to the industry and enter into the R&D segment, maybe his mentors over there, they were, they are more skillful because they had worked in a different way. If I compare my own experience, what we used 3 decades or 4 decades before, how we were trained in the colleges or at the ground level in the industry, probably we do not find the same spirit in the new entrants in the industry. So it's my humble request to all the eminent academicians over here, and through you, I am conveying it to the Pharmacy Council of India, that more and more practical skills need to be there, and there has to be some exposure even to the teachers with the industry.
So because if the teacher himself have not seen the industry, then practically there has to be some sort of the coordination. I know only proposing is not sufficient, but executing them at the practical level is something different. So if the teacher knows how the industry behaves, what all is happening, what are the restrictions for that, and discipline is there, because for everything the finance is involved in every process, right? So that's why the industry are working under the SOPs, specified SOPs. So everyone they are to follow, whether they are the new entrants or the other one. So it is my request to you all people that convey it, that more of the practical orientation should be there rather than the theoretical part. That is very, very important in pharmaceutical profession. And again, I am coming to the title of the theme, United. United means our contributions are there, but many of times they remain in segmentation, right? So that means maybe if M Pharma all throughout the country, we consider maybe around 10,000 theses they are coming up every year. But out of that, how they are contributing to the profession or the industry, that is very, very important. And if the focus is given, we all in industry, we are seeking the basic research, maybe the applied research, maybe the formulation development, we may do inside, but still there are many aspects in the research are there where industry doesn't want to invest on the basic research. So these basic research, if they are contributed well from the academia or the research orientation, it would be a great contribution. And then we can go for the joint patents and we can bring the things in market. Importance of the research is only there when there is the societal contribution. My industry is in coordination with the CSIR and DRDO. Many of the products we have taken as the transfer under the transfer of technology, and we have commercialized them. Once we commercialize them, then they feel extremely happy because their department promotes them, give them more recognition. Yes, your research is commercialized and it has come to the society, so it is given more weightage. Otherwise, and practically they have been awarded like the national scientist or like that, such recognitions are there from their department. So if even from the academia, from the universities also, if such basic things are coming, they are always helpful within the profession. And whatever we are contributing in segment, that becomes more and more united. So united is very important. What the student does in the college, he is to be prepared according to the industry need, right? Maybe at different level, maybe at B Pharma level, there is a multifarious orientation is there. So there it is something different. But otherwise, I think in specialization particularly, the practical exposure has to be there. We are welcoming in our industry some of the postgraduates for their dissertation work in case they take the project of our mutual interest. We are doing it. We are also associated with some of the academia institutions also, and with them we are taking up the small projects all together. Of course, we look into that where are the perspectives for commercializing them. That is our major focus. But not only commercializing, but even for the patient's convenience and benefits if it is there, because we are the people who remain in contact with the patients also, in contact with the doctors also. So what is the doctor expectation is there, that also comes to the pharmacist. So it's my only a small part that unitedly we look into different activities in our pharmaceutical profession, and in case we can synchronize them, then it would be of much use. That would be there. So otherwise there is no doubt about the perspectives of the pharmaceutical profession. It is a wonderful profession. It is growing leap and bound, and particularly Indian pharmaceutical community have their recognition in any part of the globe, developed to the underdeveloped or even non-developed countries also. You will find
that Indian pharmacists are there. Many of the students of even Kharsab would be there. I have met some people in University of Chicago also once I visited there. And most of the BHU or DIPSAR or any LMCP. In LMCP, there are the maybe thousands of pharmacists are there in USA who are developing very, very well. So the scope is there, opportunity is there, we have the competence also, and definitely we make the recognition for our own profession. With that, best wishes. Any particular queries there from the participants? You are welcome, please. Thank you, sir, for sharing various aspects of industrial and academic reasons. There are certain major research areas, and one my personal question is, sir, as telemedicine guidelines are over there by Government of India. Meanwhile, online pharmacy, there is less credibility has been observed. So what is your comment on online pharmacy? One third of the market has been already covered of stakeholders. So आप क्या कहना चाहेंगे सर आपके औद्योगिक अनुभव से कि ऑनलाइन फार्मेसी सही है या गलत है आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखते हुए अगर बताएं तो ऑनलाइन फार्मेसी इज द नीड ऑफ द सोसाइटी. हम हो सकता है कि कम्युनिटी फार्मेसी को देखते हुए हमारे लिए स्कोप थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन एस्पेक्ट है और अगर हम ब्रॉडली देखें तो फार्मेसी प्रोफेशन की उसमें डेवलपमेंट ही है. द वे दे आर वर्किंग, द वे दे आर hiring the services of our pharmacy people. They are not doing anything on their own. If you take the medicine from the NetMeds or 1mg or any other pharmacy, because the opportunity is there and technologically they are following the regulations also, right? So if I make a demand of any prescription medicine, definitely schedule H medicine, they will ask for the prescription. I am to upload it. Many of times the competent person, pharmacist, because I myself is also purchasing some medicines from the NetMed. So I find that they have the proper inquiry. They may ask, they check even the prescription also. And very thoroughly they check the prescription because they take their own time. Maybe at the physically at the counter they don't have the time to counter check the prescription, but when the prescription is uploaded, so it would be clarified maybe after half an hour or 1 hour according to their busy schedule. And this is one thing I think it would be very difficult to check over the online dispensing of medicines, because America and most of the developed countries, they have very well accepted it. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. This is the one common query, sir, coming nowadays since telemedicine guidelines, physicians can now prescribe online. Center of telemedicine being in plan to PGI Right. Chandigarh. So for pharmacy, bit quiet कि sir patient counseling नहीं हो पाता. There is no physical interface between the patient and the physician. So No, sir. certainly. Digitally, if you look into not only the online pharmacy, I would tell you there are many testing centers are there. These pathological labs are there who hire the services of the doctors as well as of the nutritionist. So after the report, they themselves make the query with you. They will call you on telephone, and they will ask you. They will suggest you which more tests you should do, or what is the probabilities, what food you are taking, what dietary nutrition. So I think that patient counseling is definitely there. Only thing is yet we are not habitual to the digital. Maybe as part of the society, and maybe the major part of the society is not very familiar with this process. But practically, this process, I don't see that there is any lapse. Thank you, sir, for clearing these things wonderfully, and definitely upcoming sessions में भी सर आपके सेशन रख के जो इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे.
Thank you so much, Anil sir, for solving my queries Thank you, and Saurabh ji. sparing your valuable time for us today on the eve of World Pharmacist No, Day. there is nothing like sparing. This is my duty, and at this maturity, we feel that whatever the best we can contribute to all our budding pharmacists, particularly, that would be a great contribution from us. Thank you, So sir. we Thank are you so much, sir. dedicated and devoted for the profession. Please. Thank you so much, sir. Thank you. Moving next, we have All India Rank 1, Mr. Saurabh Wag. Can you please open your screen and mic? Yes, Saurabh, please share Sure, your sir. journey, academic journey, and how did you succeeded? How did you prepared? Please tell in 4 or 5 minutes. Like you should know, all the audience are watching you. So tell in brief. Since you scored rank 1, many congratulations to you. Thank you, sir. And please. Sir, as sir mentioned now, the R&D of the industry. When I was in a bachelor, also my teachers are explaining us about how R&D is going and how the research are important for pharma to become for Indian market to become a global. That's why, sir, I have aspired to become a good scientist or something that I can value add to our pharma. That's why, sir, I am preparing for the GPAT and NIPER exam with some guidance of my teachers. Hello. And as we know, the GPAT and NIPER examination are for the admission for taking into the post graduation degree. And as we and after NIPER, we get admission into the NIPER. There are total 7 NIPER in India, which are the central government institute, and we get all facilities here that we should get to become a good scientist and a good learner. That's why it is the only motivation that I had at that time during my journey. Thank you, Saurabh, for joining and Yes, sir. telling about your success story. And now I would like to share the results. Our third theme was poster presentation. So it was in advance. It was called onto the mail ID, and Dr. Santosh Kumar Verma ji was coordinating this session, sir. And I would like to share my screen to show the results of yes. I hope the screen is visible. Santosh sir, can you confirm? No, sir. It's No, not sir. visible, sir. Not. Now Yes, it's yes, visible. yes. It become. Now, Yes, sir, it's okay, visible okay. now. Yes, yes. So there was poster making competition, and it was being called Pan India, and the first prize cash rupees of 2100 and a gift hamper from Nirali Prakashan goes to R. Raja Murgaran. He conceived first prize is it belongs to SM College of Pharmacy, Erode, Chennai, Tamil Nadu. Congratulations to you, Raja. Second prize goes to Harshita. She is a student of Bachelor's of Pharmacy from Laureate Institute of Pharmacy, Himachal Pradesh. Congratulations to you, Harshita. Third prize goes to Sachin Thakur, Akal College of Pharmacy, Martwana Sahib, Punjab. Many congratulations to you, Sachin Thakur. He belongs to Sangrur, Punjab. Fourth prize goes to Tania. She is a student of B Farm at Guru Gobind Singh College of Pharmacy, Yamuna Nagar, Haryana. Fifth prize goes to Muskan and Ashna. Again, same college, Guru Gobind Singh College of Pharmacy, Yamuna Nagar. Many congratulations to you, Muskan and Ashna. Sixth prize goes to Simi Gupta, a B.Pharm student of Srimati Vidyavati Group of Institution, Jhansi, Uttar Pradesh. Many congratulations to you, Simi. Seventh prize goes to Cecil, a B.Pharm student of Guru Gobind Singh College of Pharmacy, Yamunanagar, Haryana. Many congratulations to you, Cecil. And the eighth prize goes to Soumya, a B.Pharm student of JS University, Kolkata, West Bengal. To the second and third position, 1500 rupees cash prize and a gift hamper from Nirali Prakashan. Fourth and fifth, 1100 rupees cash
and a gift hamper from Nirali Prakashan. Consecutively 6th, 7th, and 8th, 500 rupees prize cash and gift hamper from Nirali Prakashan. So many congratulations to all the achievers. And since sir this whole day was planned and it gone very continuously since morning the lectures were started, so this program was dedicated to father of pharmacy, Indian pharmacy, Professor M.L. Shroff sir and Professor Harkishan Singh sir for his contribution towards pharmaceutical sciences in India. And the theme given by FIP United, Pharmacy United in Action for a Healthier World by FIP. And this is our guest and chief guest for the function. Due to some reasons, Professor Ranjit Singh, Professor Mahesh Prasad, Professor M. Asawat was not able to join us. So in this program today, we conducted 10 lecture series for the student development program where various speakers did participated. This is a souvenir picture, a photo from FIP constituent meeting held on 25th September 1912 in The Hague. This city, The Hague, is in the Netherlands, where the FIP constitution was held on 25th September. That's why we celebrate this World Pharmacist Day on 25th September every year. Then we had interaction with GPAD holders, and they did give tips to the students regarding their whole success saga. And this lectures were conducted today, in which Professor Anadupa, Dr. Ashwini Dhingra, Dr. Shri Narendra Ahuja, Professor Geer from University of Kashmir, Dr. Vimal Kumar from SLS ITM Baroda, Professor Nagappa, retired professor from Manipal College of Pharmacy and right now serving as National President ACPI. Then Professor Alok Mukherjee, Principal United Institute of Pharmacy, who delivered an excellent lecture, which was very inspiring and motivating. Another the three lectures by Professor Jayabilan Govindaswamy, Professor Jagannath Sahu, and Dr. Pallavi M. Lavhale was delivered. And the whole session was moderated wonderfully by Dr. Santosh Verma and Dr. and Amit Jha ji. And this is the session we witnessed now, YouTube live. This session was going on, and certainly all the Pharmalok team members, Rishabh Banoj ji, Ankur Agarwal ji, Santosh Verma ji, did all participated in this function very actively. So coming to the point, coming to this continuation of last moments, I would like to call Dr. Santosh Kumar Verma ji to propose vote of thanks. Santosh Kumar Verma ji को मैं बुलाऊंगा धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए. Over to you, sir. Thank you, Jose Saab. Last but not least, I want to say, due to the blessings of our gurus over here and behind the curtain, we are here to celebrate this World Pharmacist Day today with the grace of presence of these dignitaries with us. तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बस आज का दिन जो हमने तय किया था वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे बनाने का अपने टीम फार्मा लोग के साथ ऑनलाइन माध्यम से, तो सर लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से ये काम पूरा हुआ और टीम ने दिन रात लग के इस पे काम किया. इसके लिए डॉक्टर सौरभ खोसे सर, गीता मैडम, अपने अंकुर अग्रवाल जी, भनोट साहब, ऋषभ भनोट जी, और साथ ही हमारे जो पर्दे के पीछे रहने वाले जो हमारे टेक्निकल सपोर्ट में आशीष झा जी, जो मुझे उम्मीद है सुबह 8:30 बजे से अभी जो टाइम हुआ है अभी तक लगातार वो स्क्रीन पे ही हैं बैकग्राउंड में. तो और अमित झा जी का कोऑर्डिनेशन हमेशा ही हैट्स ऑफ करने वाली बात रहती है. तो सबका मिला जुला प्रयास रहा जो कि हम अपने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना पाए. और साथ ही हम अपने इवोल्यूशन टीम को जिनने की इतने सारे पार्टिसिपेशंस आए थे पोस्टर मेकिंग के, उसका बड़ा ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करके उनने टॉपर्स उसमें से निकाले, तो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है. और साथ ही आज हमारे बीच में जितने भी जीपैट टॉपर्स 2022 के आए, जो कि एक तरह से देखा जाए कि आने वाले जो बडिंग फार्मासिस्ट हैं जो अपना करियर अपने हायर एजुकेशन में रखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह वो होंगे. तो इन द auspicious presence of our dignitaries teacher, I would like to thanks
all of you. Thank you, sir, from the part of Team Thank you. Pharmalo. Thank you, Santosh sir, Thank and you. I Thank would you very like to much, thank Santosh. our co-moderator also, Dr. Geeta ma'am. Sorry, we forgot your name, ma'am. And in the last, we would like to thank our all dignitaries, Professor R.K. Khat sir, Sanjay K. Jain sir, Anil sir, Mishra sir, and Mishra in ji, the last ji. we do have our this Amit Jha ji. So Amit Jha ji is Hmm. there. So please, Amit ji, say a couple of words. अब आदरणीय हमारे मेंटर्स यहाँ साक्षात बैठे हैं, इससे बड़ा सुखद अनुभूति क्या हो सकता है कि हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे अगर सेलिब्रेट करें और हमें ऐसे महान गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से जुड़ करके आज जो भी इस कार्यक्रम को जिन्होंने भी देखा है, अनुभूत किया है इस कार्यक्रम का, उन्हें बहुत ही सुखद अनुभूति हुई होगी। और कहीं ना कहीं एक संकल्प लेने की आवश्यकता है बदलते परिवेश में, समय के साथ, और ये तय करना होगा कि हम अपने इस सुंदर से प्रोफेशन को, मानवता की सेवा में तत्पर इस प्रोफेशन को हम क्या दे सकते हैं। इस प्रोफेशन ने हमें बहुत कुछ दिया, अगर हम कभी अपने अंदर झांक के देखें तो एक जो हमारा नाम है, हमारा जो काम है, हमारी जो कुर्सी है, हमारी जो उपलब्धि है, ये सब इस प्रोफेशन की देन है। अब सोचना ये है और ये तय करने का समय है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी से जुड़ा हूँ और ये एक माँ की भांति मुझे पाल पोस रही है। तो मेरा दायित्व है कि मैं ये सोचूं कि मैं इस प्रोफेशन को क्या दे सकता हूं, अगर मुझे ये मेरी माँ इतना कुछ दे रही है। और ये सोचने का जो समय है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे प्रोफेशन से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति के लिए है जो समाज में विभिन्न किसी भी रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज उनको संगठित होने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। मैं आशा करूंगा कि हमारा जो अगला वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे होगा, उस दौरान, उस दिन हम ये जरूर देखेंगे कि हम कितना जुड़ पाए, कितना ज़्यादा योगदान दे सकने में सक्षम हो पाए। एक हम इसका जरूर निरीक्षण करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को अमित झा की तरफ से, टीम फार्मालोक की तरफ से, हमारे मेंबर्स की तरफ से, खास तौर से यहाँ पर इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे गुरुजनों ने, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनका दिन रात का परिश्रम रहा, हमारे मेंटर्स जिनके सानिध्य में आप सभी के सानिध्य में हम जो काम करते हैं, उसके लिए भी विशेष रूप से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं मैं। आप सभी ने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया और आपकी सहभागिता से हमें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो एक मोटिवेशन मिला है, उसके लिए भी विशेष रूप से धन्यवाद। जिन बच्चों को आज हमने इस कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश की है, इसके माध्यम से हमने सिर्फ एक संदेश देना चाहा है इस प्रोफेशन में कि आप अपने भविष्य को पीछे छोड़ के आगे जाने की बात न करें। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने विद्यार्थियों को अपने साथ लेके चलें और उनके द्वारा जो अनुभव हमें मिलता है वो सर्वोपरि होना चाहिए कि एक्चुअल में उनको क्या प्रॉब्लम है, या उनके तरफ से क्या अच्छी चीजें हमें बताई जा रही हैं, इसको भी सुना जाए, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, बच्चों का भी एक रोल मॉडल बने जो कि स्वयं कुछ बच्चे हों। और उस कड़ी में हमने फार्मालोक की तरफ से ये प्रयास किया कि ऐसे बच्चों को भी फेलिसिटेट किया जाए, उनका भी सम्मान किया जाए, उनका भी उत्साहवर्धन किया जाए। तो हमने इस क्रम में सर उनको भी यहाँ बुलाया। आशा करूंगा कि ये प्रयास आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो एक बार पुनः आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। थैंक यू सर। पुनः सर आप सभी लोगों का धन्यवाद एक बार सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम सर। Thank you so much sir for joining and now the function is officially off। और पुनः आप सभी गुरुजनों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, सादर नमन मेंटर्स का। और निश्चित तौर पर हमारे ऑडियंस ने इस विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर आज जो ये कार्यक्रम को सुना, अभिभूत किया और जो ज्ञान धारा बही है, विद्यार्थियों को सीखने से इससे अवश्य मिलेगा। और निश्चित तौर पे ये रिकॉर्डिंग आज से 10 या 15 साल 25 साल बाद जब आने वाली जनरेशन्स को देखने को मिलेगी तो ये अपने आप में एक सोवेनियर होगी। पुनः फार्मालोक की ओर से सभी ऑडियंस का धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।